क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों का इस सेशन कुछ से? साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। एक्चुअली जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, मैंने देखा है, मैंने जितने लोगों को रिकमेंड किया है, वो जब इस बुक को पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये बुक मेरे लिए लिखा गया है। मैं बहुत कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। अच्छा ये होगा कि आप लोग सीधा स्टार्ट कीजिए बुक को और जल्दी से जल्दी फिनिश करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके दिमाग में जो चल रहा होता है लेने के बाद या लेने के जस्ट पहले, उन सबका आंसर इसमें है। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट कीजिए। कौन स्टार्ट करेगा आज? ओके, सो एज यू ऑल नो, बुक रीडिंग सच में ही लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। एक सीईओ जो है वो एवरेज 1 से 2 किताब इन अ वीक जरूर पढ़ते हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि पूरे दिन जो आपके माइंड में प्रॉब्लम्स या कुछ कंफ्यूजन चल रहा होता है, अगर आप कोई भी किसी भी टाइप की बुक पढ़ने की हैबिट आपके अंदर होती है ना, तो वो पढ़ते पढ़ते सम हाउ यू गेट दैट सोल्यूशन। तो मैंने सर से डिस्कस किया कि भाई लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ साइकोलॉजिकली बहुत परेशान रहते हैं। तो क्यों ना हम एक बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट करें, ताकि इन लोगों के अंदर बुक्स भी पढ़ने की हैबिट भी डेवलप हो, कुछ कुछ वो सीखें भी, और उनके ट्रेडिंग स्टाइल में भी सुधार आए। तो बुक रीडिंग का ये सेशन जो है, इसके कुछ हम आज फर्स्ट डे है, रूल्स डिसाइड करते हैं। पहली बात तो ये कि इस बुक रीडिंग सेशन में हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस लेने नहीं आए, राइट? क्योंकि ये बुक इंग्लिश में है, तो ऑफ कोर्स हम सब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होगा, कोई हिंदी में बहुत अच्छा होगा, तो दैट डजंट मीन कि हम ये सोचें कि भाई हमें बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम अटकेंगे, राइट? तो इट्स अ कम्युनिटी बुक रीडिंग सेशन। कम्युनिटी मीन्स हम सब एक साथ इस बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में सबको अलॉट करूंगी, 5 5 मिनट्स। आप रीड करें, कम फॉरवर्ड, बिल्कुल भी ना हिचके कि मैं रीडिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ तो मुझे बुक नहीं पढ़नी है। वी ऑल आर हेयर टू लर्न, नॉट टू जज अदर्स, राइट? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा स्पेशल सपोर्ट है उन लोगों के लिए जो आगे आकर अपने आप को वॉलंटरली बुक रीडिंग के लिए लेकर आएंगे अपने आप। दूसरी चीज, बुक रीडिंग के साथ साथ हम थोड़ा सा 5 5 मिनट कुछ और भी सेशंस रखेंगे। इसीलिए मैंने मैसेज डाला था कि सभी पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे। बुक रीडिंग जो हमारी 40 to 45 मिनट्स के अराउंड रहेगी। ऑफ कोर्स आज फर्स्ट डे है तो शायद हो सकता है थोड़ा कम हो। उस रीडिंग सेशन के बाद हम 5 मिनट्स गोल राइटिंग लिखेंगे। गोल्स जो शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है या ये चाहिए मुझे, या ऐसे लाइफ जीनी है, XYZ कुछ भी। जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी मैं। एंड उस गोल्स को लिखने के बाद हम 2 से 3 मिनट्स आईज क्लोज करके विजुलाइज करेंगे कि जो गोल्स हमने सेट किए हैं अपनी लाइफ में, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और वो गोल्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन करेंगे। थर्ड थिंग जो इस सेशन में हम करेंगे वो है ग्रैटिट्यूड, जो कि आजकल कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, भूल जाते हैं कि ईश्वर ने जो हमें दिया है उसमें खुश रहने की बजाय जो नहीं मिल रहा है उसमें हम थोड़ा दुखी रहते हैं, राइट? तो ग्रैटिट्यूड को, जहां हम भारत जैसे देश में रहते हुए जहां हर चीज में ग्रैटिट्यूड है, आपको नदियों की पूजा करनी सिखाई क्योंकि आपको पानी के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपको सूरज देवता को जल चढ़ाने को सिखाया क्योंकि आपको सूरज देवता को रोज ग्रैटिट्यूड करना है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत शायद भूल गए हैं, तो वो ग्रैटिट्यूड हम दोबारा से सिर्फ 2 से 3 मिनट रोज लिखेंगे। तो ये चीजें हमारी बुक रीडिंग का एक पार्ट रहेंगी। आई होप आप सबका मुझे साथ मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बुक रीडिंग नाउ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
So this is the book ट्रेडिंग इन द जोन. मैंने थोड़ा शेयर भी किया था इसके बारे में आपके ग्रुप में ही. मार्क डगलस एक बहुत फेमस राइटर है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, राइट. और हम ये बुक्स, इस बुक को खत्म होने के बाद बाकी की बुक्स भी जरूर पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. कौन वॉलंटरली आज स्टार्ट करना चाहता है? अच्छा, बुक रीडिंग का हमारा जो सिस्टम रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी बुक को पढ़ेगा उसको उसमें से जो भी पॉइंट समझ में आ रहा है वो अपने व्यू रखे. कोई और अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है तो थोड़ा उसके बारे में बोल सकता है, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला पर्टिकुलर एरिया नहीं समझ में आया, तो वी कैन डिस्कस. सो आई रिक्वेस्ट समवन वॉलंटरली प्लीज बोलें जो रीड करना स्टार्ट करना चाहता है, और एल्स आई विल. राम सरन जी, यू वांट टू स्टार्ट? यस यस. Yes, sir. A great bull market stock has led to an equally great bull market. The number of books published on the subject of how to make money trading market. We know many ideas about some good, some not, some original, some just a packaging of earlier work. Occasionally, so a writer comes forward with something that really sets him or her apart from the pack, something special. One such writer is Mark Douglas. Mark Douglas, in Trading in the Zone, has written a book that is the accumulation of years of thought and research, the work of a lifetime. And for those of us who view trading as a profession, he has produced a gem. Trading in the Zone is in depth look at the challenges that we face when we take up the challenge of trading to the noise. मैम थोड़ा इसको ऊपर करिए जी. To the noise that we face when we take up the challenge of trading to the noise. The only challenge appears to be to find a way to make money. Once the noise learns that if brokers' advice and other ways to justify buying or selling do not work consistently, he discovers that he either needs to develop a reliable trading strategy or purchase one. After that, trading should be easily right. All you have to do is follow the rules, and the money will fall into your lap. At this point, it is not before Vices discover that trading can turn into one of the most frustrating experiences they will ever face. This experience leads to the oft-stated statistic that 95% of future traders lose all of their money within the first year of trading. Stock traders generally experience the same result, which is why pundits always point to the fact that most stock traders fail to outperform a simple buy and hold investment scenario. थोड़ा ऊपर इसको करना पड़ेगा स्क्रीन को. जी. So why do people, the majority of whom are extremely successful in other occupations, fail so majorly as traders are successful traders born and not made? Mark Douglas says no. What's necessary, he says, is that the individual acquire the trader's mindset. It sounds easy, but the fact is, this mindset is very foreign when compared with the way our life experience teaches us to think about the world. At 95% failure rate makes sense when you consider how most of us experience life using skills learned as we grow. When it comes to trading, however, it turns out that skills we learn to earn high marks in school, advance our career,
and create relationships with other people. The skills we are taught that should carry us through life turn out to be appropriate for trading. Traders, we find out, must learn to think in terms of probabilities and to surrender all of the skills we have acquired to achieve in virtuality every other aspect of our life. In trading in the zone, Mark Douglas teaches us how. He has put together a very valuable book. His sources are his own personal experiences as a trader's coach in Chicago, author, the lecturer in his field of trading psychology. My recommendation, enjoy Douglas trading in the zone and in doing so, develop a trader's mindset. वेरी गुड रामचरण जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपनी लर्निंग शेयर कीजिए, आपने क्या समझा पर्टिकुलरली? इसमें ये था कि अगर हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट की वजह से ही हम लोग जो है 95% फेलियर होते हैं। हम अपना पैसा जो है पहले 1 साल में खो चुके होते हैं, क्योंकि हम जो समझते हैं कि वो लोग जो ये हमें टिप्स देते हैं वो सही है, वो लोग कुछ देखते हैं या उनकी टिप्स पे हम काम करते हैं, या कोई ब्रोकर बता देता है उसके हिसाब से काम करते हैं, वो हमारा माइंड सेट है। लेकिन अगर हम टेक्निक सीख जाते हैं तो हम उन चीजों से दूर होकर और सही रास्ते से ट्रेड को पकड़ना सीख जाएंगे, ताकि उससे आपके लिए आसानी होगी ट्रेड ले। वंडरफुल, वंडरफुल। एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? क्या आपकी लर्निंग, क्या समझ में आया? Ma'am, so one important point that it was my takeaway was that we are not psychologically trained in our high schools or college or the way we live our life to trade, because wo psychology is entirely different, right? So we are not used to that kind of psyche, and I guess that is what Mr. Mark has explained in this book, how you achieve that, and then how can you join the clan of a successful trader. So Absolutely, absolutely. ये एक लाइन है जो यहाँ मुझे दिख रही है। So why do people, the majority of whom are extremely successful in other occupations, right? कोई हो सकता है बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हो, कोई IIM से पास आउट हो, कोई बहुत अच्छा लॉयर हो, बट दैट डजंट मीन कि वो यहाँ भी आकर के बहुत ही अच्छा शुरुआत में करने लगेगा, है ना? Correct. So successful traders are not born, they can be created, right? With regular practice and all. Anyone else? और कुछ आपका टेक अवे, or we can proceed? So my takeaway was that most of the novice traders basically focus more on the outcome of the trade. That's why they just want to get some tips and ideas from the broker, not try to learn the basic psychology of trading. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पैसा चीज ही ऐसी होती है यहाँ, क्योंकि हम वो वीडियोस में देख करके ना माइंड सेट बन जाता है, अरे यार उसने करोड़ों बनाए हैं तो मैं भी बना सकता हूँ, है ना? और बिना कुछ सीखे और बिना बहुत सारी चीजें किए हुए हम कूद जाते हैं बिना हाथ पैर मारना सीखे हुए पानी में डूब जाते हैं और फिर सोचते हैं अरे यार पहले स्विंग सीख ली होती। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, आगे बढ़ते हैं। हु वुड लाइक टू रीड देन नेक्स्ट? मैं आता हूँ। I can read. हाँ, आई मीन एक एक करके सबकी वो आएगी। या यहाँ से स्टार्ट। This is done, ma'am. This is Please done. start. Forward is done. This is done. Next page is preface. Yeah, preface करना, right? Padman, please go ahead. Okay. The goal of any trader is to turn profits on a regular basis. Yet so few people ever really make consistent money as a trader. What accounts for the small percentage of traders who are consistently successful? To me,
determining factor is psychological. The consistent winners think differently from everyone else. I started trading in 1978. At the time, I was managing a commercial casualty insurance company, insurance agency in the suburbs of Detroit, Michigan. I had a very successful career and thought I could easily transfer that success into the trading. Unfortunately, I found that was not the case. By 1981, I was thoroughly discussed with my inability to trade effectively while holding another job. So I moved to Chicago and got a job as a broker with Merrill Lynch at the Chicago Board of Trade. How did I do? Well, within 9 months of moving to Chicago, I had lost nearly everything I owned. My losses were the result of both my trading activities and my exorbitant lifestyle, which demanded that I make a lot of money as a trader. From these early experiences as a trader, I learned enormous amount about myself and about the role of psychology in the trading. As a result, in 1992, I started working on my first book, The Disciplined Trader, Developing Winning Attitudes. When I began this project, I had no concept of how difficult it was to write a book or explain something that I understood for myself in a manner and from that would be useful to other people. I thought it was going to take me between 6 and 9 months to get a job done. It took 7.5 years and was finally published by Prince Hall in 1990. In 1983, I left Merrill Lynch to start a consulting firm, Trading Behavior Dynamics, where I presently develop conduct seminar on trading psychology and act in a capacity of what is commonly referred to as a trading coach. I have done countless presentation for trading companies, clearing firms, brokerage houses, banks, and investment conferences all over the world. I have worked at a personal level, one-on-one with a virtually every type of trader in a business, including some of the biggest floor traders, hedgers, option specialists, and CTAs, as well as neopathies as Neophytes. As of this writing. I have spent the last 17 years dissenting the psychological dynamics behind trading so that I could develop effective methods of teaching the proper principle of success. What I have discovered is that at the most fundamental level, there is a problem with the way we think. There is something inherent in the way our minds work that doesn't fit very well with the characteristics shown by the market. Those traders who have confidence in their own trades, who trust themselves to do what needs to be done without hesitation, are the ones who become successful. They no longer fear the erratic behavior of the market. They learn to focus on the information that helps them. Nature. Page down. They help them spot opportunity to make a profit rather than focusing on the information that reinforces their fears. While this may sound complicated, it all boils down to learning to believe that first, you don't need to know what's going to happen next to make money. Second, anything can happen. Third, every moment is unique, meaning every edge and outcome is truly a unique experience. The trade either works or it doesn't work. In any case, you wait for the next edge to appear and go through the process again and again. With this approach, you will learn in a methodological, non-random fashion what works and what doesn't. And just as important, you will build a sense of self-trust so that you won't damage yourself in an environment that has unlimited qualities that markets have. Okay. Yeah, sure. पद्मांक अपनी शेयरिंग. हाँ, तो इसमें इन्होंने यही बताया कि इनका जो साइकोलॉजिकल अप्रोच जो डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने अपने
खुद के बिजनेस को सक्सेस होने के बाद जब इन्होंने नेक्स्ट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस या एज अ ट्रेडर जर्नी स्टार्ट की, तो उनको लगा कि नहीं, ये डिफरेंट साइकोलॉजी है जिसमें कि जो चीज विच इज नॉट इनहेरेंट फॉर ऑल पीपल, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखना पड़ता है। तो इन्होंने उस चीज को एज अ प्रोफेशन डेवलप किया। देन उन्होंने खुद कंसल्टिंग एंड बाकी जो ऐसे नोविस आ रहे हैं जो कि ट्रेडिंग को जस्ट टिप और जस्ट मार्केट में पैसा बनाने की एक मशीन समझते हैं, उनके लिए उन्होंने साइकोलॉजी डेवलप करने कैसे सीखे, तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया। देन उन्होंने एक बुक लिखा, डिसिप्लिन ट्रेडर, जो पहली बुक थी। तो उसमें उन्होंने यही फोकस किया। अल्टीमेटली उनका जो सार था उस बुक का कि आप एज अ ट्रेडर अपने प्रोसेस पे फोकस कर सकते हो, ना कि आउटकम पे। तो क्योंकि अगर प्रोसेस पे फोकस्ड है तो आउटकम उसका बाय प्रोडक्ट होगा। तो इसीलिए सेम प्रोसेस को अगेन एंड अगेन रिपीट करना ही इज बेसिकली मेजर practice of the practice as a trader. Right, absolutely right. Anyone else? अपनी शेयरिंग क्या इस पैराग्राफ से थोड़ा समझ में आया, या आपने पर्टिकुलरली क्या आपको कैच किया? Basically, like one biggest point was that only somebody who has confidence in his or her trade as a trader will succeed here, right? उसको पता है कि कुछ भी आउटकम हो, उसको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है। So that person can find opportunity, that person can focus on his trade rather than अपने fears के ऊपर ध्यान देने के बजाय वो अपने opportunities को ढूंढता है, वो डिसिप्लिन रहता है, वो उसको आउटकम से फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है दो ही चीज होगी ट्रेड के बाद, या तो उसके हित में जाएगा या फिर उसका पैसा जाएगा, तो लिमिटेड लॉस, तो इधर टारगेट और स्टॉप लॉस। तो उन्होंने बात किया है, हिंट दिया है, लाइक यहाँ पे भी लिखा है, यू डोंट नीड टू know what's going to happen next to make money, and anything can happen. So that is the biggest takeaway, that anything can happen and you are ready for both. Right. इधर क्या होता है ना कि हम सिर्फ मोस्ट ऑफ अस इनफैक्ट बहुत ही कॉमन है यार, उसने बिजनेस शुरू किया ये वाला ना, इसमें बहुत पैसे बन जाते हैं, या ट्रेडिंग में तो पैसे बनते हैं या डूबते हैं, राइट। बट कभी भी हम अपनी पर्सनल साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं देते। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रेडिंग, राइट। तो मार्क डगलस जी को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पर काम किया और इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। और अभी हु विल रीड नेक्स्ट? Ma'am, I would like to volunteer. Please go ahead. Okay. So most traders don't believe that their trading problems are the result of the way they think about trading, or more specifically, how they are thinking while they are trading. In my trading book, The Disciplined Trader, I identified the problems confronting the trader from a mental perspective, and then built a philosophical framework for understanding the nature of those problems and why they exist. I had 5 major objectives in mind in writing Trading in the Zone: to prove to the trader that more or better market analysis is not the solution to his trading difficulties or lack of consistent results; to convince the trader that it's his attitude and state of mind that determines the results; to provide the trader with the specific beliefs and attitudes that are necessary to build a winner's mindset, which means learning how to think in probabilities; to address the many conflicts, contradictions, and paradoxes in thinking that cause the typical trader to assume that he already does think in probabilities when he really doesn't; to take the trader through a process that integrates his thinking strategy into his mental system at a functional level. Note, until recently, most traders were men, but I recognize that more and more women are joining the ranks. In an effort to avoid confusion and awkward phrasing, I have consistently used the pronoun he throughout this book in describing traders. This certainly does not reflect any bias on my part. Can you please move it to the front? Trading in the Zone
presents a serious psychological approach to becoming a consistent winner in your trading. I do not offer a trading system. I am more interested in showing you how to think in the way necessary to become a profitable trader. I assume that you already have your own system, your own age. You must learn to trust your age. The age means there is a higher probability of one outcome than another. The greater your confidence, the easier it will be to execute your trades. This book is, please move forward, and to give the insights and understanding you need about yourself and the nature of trading so that actually doing it becomes as easy, simple, and stress free as when you are just watching the market and thinking about doing it. In order to determine how well you think like a trader, take the following attitude survey. There are, please move forward. There are no right or wrong answers. Your answers are an indication of how consistent your current mental framework is with the way you need to think in order to get the most out of your trading. Thank you. Okay, thank you. Please share your learnings. I think easy language में ही लिखा हुआ है book और बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, isn't it? Yes. So basically, author wants to convey a message that why he has written a book. He wants to give a message that you already know your system, you already know how to trade, but he wants us to think in a way so that you do not psychologically damage yourself and be a consistent winner. And he has also devised a system, and what actually he is expecting from us, he has also conveyed it. What he wants to give to us, like how a trader should think, why he should think in a probability manner, and that's why this book is written. So there's second most important thing that he has mentioned कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एनालिसिस आपको विनर नहीं बनाता है, बाकी आपका स्टेट ऑफ माइंड और वो आपको हेल्प करता है एक फाइंड करने में कि आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो या नहीं. तो एक अच्छा ट्रेड के लिए आपको अच्छा स्टेट ऑफ माइंड चाहिए. Right. No, not just more technical analysis. So it's not like you learn everything technical and everything under the sun, but आपका साइकोलॉजी खराब है तो सक्सेस नहीं देगा. बट अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है तो वो उससे आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो. कीपिंग थिंग्स इजी एंड सिंपल, लाइक इट वुड बी एज इजी एज लाइक you are watching the market and you are thinking about it, आप वैसे ही ट्रेड कर लो. It's that easy. So I feel technical analysis से ज्यादा mental analysis की भी जरूरत है ना. Somewhere it is missing. Very much. और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इसमें कि recently most traders were men. तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पर क्या कहते हैं बचा लिया है कि भाई मैंने ही किया. दिस डजंट मीन कि औरतें नहीं करती हैं ट्रेडिंग. तो यहाँ पर and also he is not biased. he is not biased. he is actually intelligent. वो बुक लिखने में भी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है that he was really an intelligent person, क्योंकि उनको समझ में आई कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की बुक्स की भी जरूरत पड़ने वाली है. Isn't it? Right. अच्छा, एक चीज जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी प्रॉपरली बुक पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा लगेगा, एक पॉइंट आएगा जब लगेगा यार बड़ी बोरिंग सी बुक है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, इससे कुछ नहीं सीखने को मिलेगा. तो मैं बीच में 1 मिनट लेकर अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. कई बार पूरी बुक पढ़ने के बाद वो एक लाइन मिल जाती है जो आपकी लाइफ में टर्न लाने के लिए बहुत होती है. वो एक लाइन, वो आई मीन पूरी 100 पेज की आप बुक पढ़ जाएंगे तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 टेक अवेज मिले. तो आपको अगर कोई की पॉइंट समझ में आता है तो प्लीज नोट इट डाउन. और इस माइंडसेट से नहीं रहना है कि यार क्या है, ये तो हम खुद ही कर लेंगे या हो ही जाएगा, मैं खुद पढ़ लूंगा. कम्युनिटी रीडिंग से क्या होता है ना, हम सबकी एनर्जीज भी कनेक्ट होती है, राइट. तो हम कई बार जो सोच रहे होते हैं वो सामने वाला जब बोल देता है तो हमें लगता है हाँ यार सही सही कह रहा है, राइट. तो इसलिए इसको हम थोड़ा सीरियसली और अच्छे से करेंगे. हु विल रीड नेक्स्ट? आई थिंक यहाँ रॉन्ग आंसर्स तक पढ़ लिया था हमने. 2 लाइनें और हैं ये. मैं योर आंसर्स आर एन इंडिकेशन ऑफ हाउ कंसिस्टेंट योर करंट mental framework is with
the way you need to think in order to get the most out of your trading. अब ये attitude survey है, ये of course सबका different होगा, तो इसको सिर्फ हम read कर लेते हैं. और ये एटीट्यूड सर्वे आप, मैं बुक का पीडीएफ अभी सेशन के बाद शेयर कर दूंगी. आप लोग प्लीज ये एटीट्यूड सर्वे अपने लिए पर्सनली जरूर कीजिए, so that you'll be able to analyze your mental status about related to trading, right? तो मैं ये एटीट्यूड सर्वे वाला सिर्फ, can someone read this? Yeah, I can go with that. This is Vikram. Sure, please. Yeah, so attitude survey. Number one, to make money as a trader, you have to know what the market is going to do next. Agree or disagree? Second question is, sometimes I find myself thinking that there must be a way to trade without having to take a loss. We all have to answer this in agreement and disagreement. Making money as a trader is primarily a function of analysis. Losses are an unavoidable component of trading. My risk is always defined before I enter a trade. In my mind, there is always a cost associated with finding out what the market may do next. I wouldn't even bother putting to the next trade if I was not sure that it was going to be a winner or loser kind of. Next is, the more a trader learns about the market and how they behave, the easier it will be for him to execute his trades. My methodologies tell me exactly under what market conditions to either enter or exit a trade. Even when I have to clear signal to reverse my position, I find it extremely difficult to do. I have sustained periods of consistent success, usually followed by some fairly drastic drawdowns in my equity. When I first started trading, I would describe my trading methodology as haphazard, meaning some success in between a lot of pain. I often find myself feeling that the market are against me personally. As much as I might try to let go, I find it very difficult to put past emotional wounds behind me. I have a money management philosophy that is founded in the principle of always taking some money out of the market when the market makes it available. A trader's job is to identify patterns in the market's behavior that represent an opportunity, and then to determine the risk of finding out if these patterns will play themselves out as they have in the past. Sometimes I just can't help feeling that I am a victim of a market. When the trade, I usually try to stay focused in my time frame. Trading successfully requires a degree of mental flexibility far beyond the scope of most people. There are times when I can definitely feel the flow of the market. However, I often have difficulty acting on these feelings. There are many times when I am in a profitable trade and I know the move is basically over, but I still won't take my profit. No matters how much money I make in a trade, I'm rarely ever satisfied and feel that I could have made more. When I put on a trade, I feel I have a positive attitude. I anticipate all of the money I could make from the trade in a positive way. The most important component in the trader abilities to accumulate money over time is having a belief in his own consistency. If you were granted a wish to be able to instantaneously acquire one trading skills, what skill would you choose? I often spend sleepless nights worrying about the market. Do you ever feel compelled to make the trade because you are afraid that you might miss out? Although it doesn't happen very often. I really like my trades to be perfect. When I make a perfect call, it feels so good that it makes up for all of the time that I don't. Do you ever find yourself planning traded trades you never execute and executing trades you never planned? In a few sentences, explain
why most traders either don't make money or are not able to keep what they make. I guess that should be enough. Thanks. I've gone through all the questions. Thank you so much. Thank you so much. So Thank which you. question you found it was made for you only? All of Yeah, them. actually. Yeah. Come on, Vikram. See, a lot of questions were there which were exactly meeting Still, actually I with mean, one my question, characters. yes. Yeah, actually, the most of the time I'm in a profit, and then I just stay there expecting some more, and I came out of the trade when I'll be in a loss actually. So those things happen more frequently with And me. that was 21 number. मैंने specially Exactly. उसको point लिखा कि सर, क्योंकि generally मैं सुनती रहती हूँ कि profit में होने के बाद भी उनको लगता है और आएगा और वो निकल ही नहीं पाते हैं. Exactly. यहाँ पर मैं सर का जो वो है स्ट्रैटेजी है वो सबको दोबारा से याद दिला दूं. सर कहते हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का, ताकि दिल में थोड़ा कम दर्द हो अगर वो रेड कैंडल बन जाती है तो. Today even I was in a profit of something 3,000 in the morning, and I just like expecting some more, and it's I came out from the loss in the loss actually. और So, एक और पॉइंट जो मुझे बड़ा कैची लगा कि स्लीपलेस नाइट्स, और मैं तो देखती हूँ कि जिनके That's happening ट्रेड्स with me. अच्छे होते हैं वो तो ट्रेड लेके सो जाते हैं. That's happening with me actually. I'm not able to sleep properly from sometimes, but I don't know whether it is because of market, but yeah, I keep on बट thinking अभी sometimes out of यही market. साइकोलॉजी हमें यहाँ सीखनी है कि इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि ट्रेड लेने के बाद आप सो सकते हैं दिन में भी. एनीवन एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगाओ, और एल्स वी कैन मूव अहेड. मैम फोबिया रहता है एक तरह से कि अभी ये जो प्रॉफिट है लॉस में नहीं चला जाए तो जल्दी क्विट कर जाता है व्यक्ति. राइट. अगर इसमें से कोई क्वेश्चन किसी को पर्टिकुलर नहीं समझ में आए तो यू आर फ्री टू आस्क सलिल सर. आप मैसेज डाल दीजिएगा, सर विल डेफिनेटली आंसर. और कोई? And when we are in loss, hello. Yes. But when we are in loss, we did not book any losses. That also vice versa of that question. That 21 question number. But when we are in not profit, we did not book it. But when we are in loss, we also not book it. That we hope that it will come to our break-even point, and it will go away. Means we will get out from loss and be in green. राइट. एंड व्हाट हैपेंस कि वो और भी ज्यादा नीचे होता चला जाता है. कभी रिवर्स भी होता है. बट आई मीन हमें बेसिकली अपने ऊपर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, isn't it? Yes, we did not follow our process, and we just wait. Okay, it will come in profit, and then we will exit, and it becomes our habit, and it end up in big losses. I think. Now I'm leaving this acknowledgement, और चैप्टर फर्स्ट का हम आज 8:47 हो गए. चैप्टर फर्स्ट का हम फर्स्ट पेज तो जरूर पढ़ेंगे. सो हु विल रीड नेक्स्ट? हाँ, श्योर. अभी मुझे थोड़ा सा बताएंगे, अच्छा लग रहा है क्या पढ़ के? मैम पढ़ने की हैबिट ना बहुत छूट गई है. एब्सोल्युटली. इसीलिए मैंने स्पेशली ये प्लान किया कि भाई सबको चुरा के थोड़ा सा टाइम निकाल के लाना है. और पढ़ने की हैबिट एक्चुअल में नहीं रही, एंड इट इज वेरी नेसेसरी. बिलीव मी, आप पूरी बुक खत्म करो, उसके बाद मुझे स्पेशली थैंक यू बोलने वाले हो सब. जी बिल्कुल. और जो बिना वो रुके, बिना थके रोज बुक रीडिंग सेशन में आएगा, उसको मेरी तरफ से बुक खत्म होने के बाद एक गिफ्ट मिलेगा स्पेशली. मैम एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव टू कम टू दिस सेशन, बट क्या होता है शाम को ना क्लास वो ऑफिस के सेशंस ज्यादा होते हैं, मीटिंग्स वगैरह सेटअप दैट. अब थोड़ा तो मुझे लॉलीपॉप देना पड़ेगा ना सबको. नहीं, but I can promise you one thing, like if you're gonna share this with me, actually not with me, I guess you will share this with everyone, so I'm gonna start reading soon, and maybe आपको 9 to 10 कर दो ना टाइमिंग को. Yes ma'am. 9 to 10 कर दीजिए. 9 to 10 में कुछ इश्यूज थे, तभी मैंने 8 to 9 किया था. वैसे मैं कोशिश करती हूँ 9 to 10 का, और मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ. और दूसरी बात ये कि जो ये वीडियो होगी जो हम अभी पढ़ रहे हैं,
इसको मैं अनकट करके यूट्यूब पे डाल दूंगी, सो दैट जो नहीं भी आ पा रहे हैं किसी रीजन से, वो बाद में इसको जरूर देख ले। इसीलिए मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहते हैं कि रिवील हो, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई अपनी फोटो या नाम वाम बदल लेना, क्योंकि मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको एज इट इज डाल दूंगी यूट्यूब पर। तो आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि सबका भला होना चाहिए, जिसके पास टाइम नहीं है वो बाद में देख ले, है ना? तो चलिए, who will read this now? I can read. Push, yes, please, Yeah, please yeah. go ahead. So chapter 1, the road to success, fundamental, technical, or mental analysis. In the beginning, fundamental analysis. So that's chapter 1. So who remembers when fundamental analysis was considered the only real or proper way to make trading decisions? When I started trading in 1978, technical analysis was used by only a handful of traders who were considered by the rest of the market community to be, at the very least, crazy. As difficult as it is to believe now, it wasn't very long ago when Wall Street and most of the major funds and financial institutions thought that technical analysis was some form of mystical hocus pocus. Now, of course, just the opposite is true. Almost all experienced traders use some form of technical analysis to help them formulate their trading strategies, except for some small isolated pockets in the academic community. The purely fundamental analyst is virtually extinct. What caused this dramatic shift in perspective? I'm sure it's no surprise to anyone that the answer to this question is very simple: money. The problem with making a trading decision from a strictly fundamental perspective is the inherent difficulty of making money consistently using this approach. For those of you who may not be familiar with fundamental analysis, let me explain. Fundamental analysis attempts to take into consideration all the variables that could affect the relative balance or imbalance between the supply of and the possible demand for any particular stock, commodity, or financial instrument, using primarily mathematical models that weigh the significance of a variety of factors like interest rates, balance sheets, weather patterns, and numerous others. The analyst projects what the price should be at some point in the future. Scroll down, please. The problem with these models is that they rarely, if ever, factor in other traders as variables. People expressing their beliefs and expectations about the future make price move, not models. The fact that a model makes a logical and reasonable projection based on all the relevant variables is not of much value if the trader who are responsible for most of the trading volume are not aware of the model or do not believe in it. As a matter of fact, many traders, especially those on the floors of the futures exchanges, who have the ability to move price very dramatically in one direction or the other, usually do not have the slightest concept of the fundamental supply and demand factors that are supposed to affect prices. Furthermore, at any given moment, much of their trading activity is prompted by a response to emotional factors that are completely outside the parameters of the fundamental model. In other words, the people who trade and consequently move prices do not always act in a rational manner. Thank you so much. Kush, please अपनी learning share करो. Well, yes, the basic definition of fundamental analysis, what is it? We see fundamental factors like balance sheets, like the earning ratio, and many other factors, and weather report and blah blah blah. But for those who just see the technical analysis, they don't even bother about fundamental analysis, right? They're not about they do not see कि उसमें ऐसे भी कुछ factors है, demand and stuff like that.
And coming to the fundamental analysis point, there was one more point. I guess it was about. Ma'am, can you please scroll down? There was one point. Hello. Priti, can you go on mute? कर दिया. Okay. So, can you please scroll down? थोड़ा उसमें एक point था wherein he spoke about something जो fundamental list देखते, yeah, जहाँ पे उन्होंने weather और उसके अलावा एक और point, yeah, this one, model one. Okay. So the problem with this model is that they rarely, if ever, factor in the other traders as variable. ये वाला point में people expressing their beliefs and expectations about the future make price move, not the model. So making a financial model and trading as per the model is not enough, right? जो प्राइस मूव करता है वो उन वॉल्यूम से, उन ट्रेडर्स से मूव करता है, उनके ऑर्डर से मूव करता है, स्पेशली जो फ्यूचर्स मार्केट में वॉल्यूम पुश करते हैं और जो उसको एक किसी भी यूनिट डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं. सो वो सारे फैक्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस में फैक्टर्ड इन नहीं होते, राइट? दोज आर ऑल वेरिएबल्स व्हिच आर नेवर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. राइट. किसी और को कुछ कहना है? कुछ और समझ में आया? एनी अदर पॉइंट? Actually, पहले mostly people used to do the fundamental analysis only. मतलब पर वो fundamental को भी technical analysis की तरह use करते थे. Like now it is more over a chart. These were not available, I guess, in that's 1978, around early 80s, right? So they used to have only a balance sheet and the company's informations, and based on that they used to analyze technically those metrics. Right. But now it is completely a different ball game, and people are studying the technicals, chart studies, immediate refreshing, tools. So those are more crazy deals right now. And somewhere I feel like कि technical analysis कहीं ना कहीं वाकई में technical है, right? हमें कई बार ये लगता है यार ये concept सीख लिया, सुन लिया, या कुछ करते करते वीडियो में देख लिया या कहानी की तरह पूरे सेशन को सुन लिया तो हमें समझ में आ जाएगा. आई पर्सनली फील कि टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक जैसे आपको एक टीचर ने मैथ्स का वो क्या होता है फॉर्मूला सिखाते हैं ना, उसका डेरिवेशन सिखा दिया और फिर फॉर्मूला निकाल के बता दिया कि भाई ये फॉर्मूले का मतलब ये है. लेकिन वो जो बैक टेस्टिंग की बात, इसको मैं यहाँ से रिलेट करूंगी, लेकिन वो जो हमें बुक्स में मिलते थे ना कि एक फॉर्मूले पे 50 क्वेश्चन करने हैं, राइट? या आपको सेम चीज पर बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे हमारी बुक्स में मैथ्स में, राइट? तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से एसोसिएट करता है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपने टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ा उसको पीछे जा करके आप जब तक अपनी आंखों से खुद से अप्लाई नहीं करोगे, हाथ से लिख के नहीं देखोगे या नहीं बनाओगे कहीं ना कहीं, तो वो माइंड में रजिस्टर नहीं होता है. तो जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करने जाते हो तो बहुत सारी चीजें भूल चुके होते हैं, है ना? और क्या होता है जब हम खुद से करते हैं तो माइंड रजिस्टर करने लगता है, धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होने लगती है उस तरीके से. तो समवेयर आई फील कि टेक्निकल एनालिसिस काफी टेक्निकल है और उसको थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ में अलग तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? काफी टाइम आई थिंक आज हमारा रीडिंग में ही निकल गया, 8:57 हो गए हैं. वी स्टिल हैव 3 मिनट्स. इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, कल थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और जल्दी स्टार्ट करेंगे. 3 मिनट्स है हमारे पास. आई वॉन्ट यू टू ऑल राइट डाउन योर 3 शॉर्ट टर्म गोल्स एंड 3 लॉन्ग टर्म गोल्स. ठीक है? क्यों लिखना चाहिए और क्या और लिख सकते हैं वो हम धीरे धीरे अपनी रीडिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे. लेकिन आज जो भी मन में आ रहा है कि 3 शॉर्ट टर्म गोल जो कि आप चाहते हैं 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो, और लॉन्ग टर्म गोल 3 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं, तो वो प्लीज अभी लिख लीजिए.
3 मिनट कम होते हैं वैसे, मुझे लगता है सभी लिखने में बिजी हैं। लिखा, कुछ लोगों ने लिख लिया? Yes, ma'am. लिखा I've मैम। done. Yes. वेरी गुड। अभी क्या है ना, ये गोल्स आप लिखते रहिए और सुनते रहिए मुझे। गोल्स कैन बी डिफरेंट समटाइम्स। क्या होता है ना, जब आप 1 महीना या 15 दिन लिख लेंगे ना, फिर आप एनालाइज करिएगा अपनी डायरी में जाकर कि मैंने रोज क्या क्या गोल्स लिखे थे, और तब उसमें से आपको चूज करना है कि यस, ये एक्चुअल में मेरा प्रोमिनेंट गोल है। बिकॉज क्या होता है ना, आप कल बैठेंगे, कल कुछ और दिमाग में आ रहा होगा कि यार मुझे ये लिखना है, मुझे ये वाली चीज, मतलब पर्टिकुलर उस डे वाली चीज आ रही होगी। तो उसके लिए घबराना नहीं है, जरूरी नहीं है एक ही गोल हो आपका। जिस दिन जो समझ में आए वो लिखिए, ठीक है। और कुछ टाइम स्पैन जब आपका बदल जाएगा तो आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि यार ये वाली चीज ना मैं रोज लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, और ये चीज जो है ये मुझे समहाउ, मेरी इंस्टिंक्ट है कि ये मुझे करना है। तो इसीलिए मैं गोल राइटिंग करवा रही हूँ। इट विल रियली हेल्प यू इन आफ्टर सम डेज। एक चीज ऐड करती हूँ इसमें, मैंने कहीं पढ़ा था ये। क्या होता है कि हम कई बार ये 2 एग्जाम्पल देती हूँ। हो सकता है मैं ये गोल बनाऊं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, राइट। और बहुत सा या फिर बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो सपोज किसी को वेट लूज करना है, तो वो रोज लिखे कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो हमें प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स बनाने चाहिए हमेशा। तो मेरे गोल में ये होना चाहिए कि मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, या मैं बहुत अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो मैं प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता हूँ, या मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर लेता हूँ, राइट। तो ये चीज का भी थोड़ा सा गोल लिखने में ना ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस ओरिएंटेड आपके गोल्स हो। फाइनल रिजल्ट तो फिर मिल ही जाएगा, राइट। तो वंस यू आर क्लियर विद योर व्हाट एंड व्हाई, हाउ हो जाता है। मैम एनीवन जैसे एल्स, कोई अपनी लर्निंग शेयर करना चाहेगा? मैंने फर्स्ट गोल लिखा है टू गेट रिड ऑफ फियर वेरी नाइस, वेरी नाइस। ट्रेड, और ensure to take SL when my prop trade is opposite to me। ओके ओके। मैडम फाइनेंस और मनी तो बाद में आता है, पहले इन पे तो कम से कम ओवरकम होगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, राधेश्याम जी के लिए बिल्कुल जबरदस्त तालियां। कोई और शेयर करना चाहेगा आज के सेशन से? क्या कोई एक और की एक टेक थर्ड अवे? ओवर है मैम, एक थर्ड ओवर है मेरा, 3 लिखे। इफ आई हैव बुक सम प्रॉफिट, डोंट लेट इट लैप्स completely at the end of day। वंडरफुल वंडरफुल। आज की कोई लर्निंग शेयर, कोई एक की टेक अवे शेयर करना चाहेगा? Stick with the process, ma'am. What you have learned, be with that, confident on that, and ओके take action accordingly. ओके ओके, गुड। So, और because कोई? if you're confident on your process, then probably this fear and mindset, those will be automatically get set. ओके, शोभा जी आपको कुछ बोलना था? Think like a trader. We have ओके, यस, वेरी गुड। प्रकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? the market. What's First of all, thank you, ma'am, for this wonderful session. This is very relaxing because आप hello, या यू आर ऑडिबल। because आप इतना इनिशिएटिव लेके और इतना अपना प्रेस्टिजियस टाइम निकाल के, और मतलब उस मतलब लोगों के लिए इतना टाइम देना, और ये तो सेशन तो पूरा ही टेक अवे है, क्योंकि बुक तो इतनी अच्छी है, प्यारी है, और आप उससे समझा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, और उससे मतलब एक स्ट्रेस रिलीज होता है। जैसा ट्रेडिंग कर रहे हैं हम दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक बैठे, और उसमें मतलब फंसे हुए हैं कि कल क्या ट्रेड लेना है, कल क्या करना है। पर इससे हटके कुछ तो भी एक लर्निंग, और ऐसे आप एकदम मतलब इतना प्यार से सबको सिखा रहे हैं और सबके मतलब माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी एक चीज है।
और मतलब बोलने की और एक चीज है कि आप, हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं सब। आप वो इतना मतलब अलग वे में थिंक करने का मतलब लोगों को क्या बोलते हैं उसे मोटिवेट कर रहे हो अलग वे में थिंक करने के लिए। जैसे कि आप कुछ अलग सोचिए कि वो कहाँ पे आप फंस रहे हो, वहां से निकलने का ट्राई कर रहे हो। जैसे गाड़ी अभी फंस गई है रोड पे या किधर गड्ढे में फंसी है, उसे कैसे बाहर निकाले, उससे कैसे निकले, वो सबसे बड़ा मतलब मेरे लिए तो वही टेक अवे है। और एक पूरा मेरे लिए तो पूरा सेशन ही टेक अवे है, मतलब बाय द वे आपसे सिखा रहे। थैंक यू सो मच थैंक यू, प्रकाश जी, थैंक यू। और थैंक यू मैम। प्रेशियस और टाइम तो हम सबका है कि आप सब अपना प्रेशियस टाइम पूरे दिन में से निकाल कर लाए। एंड आई विश कि इसी तरीके से हम आते रहें और साथ में एक दूसरे के साथ लर्न करते रहें, एक दूसरे की एनर्जीज हम शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।